Hello children, in this video I am explaining you meter bridge or slide wire bridge. It is the electrical device which is used to measure the resistance or resistivity of the given wire. It is also used to verify the series and parallel combination of the resistances. It is based on Wheatstone principle. In this device, 1 meter long wire is used, hence it is called meter bridge. Since it works on the principle of Wheatstone bridge and 1 meter long wire is used, so it is called meter bridge. And it is also known as slide wire bridge because jockey is slided on the wire to get the null point or zero deflection point. Jockey is a pencil-like structure. Meter bridge is made of wooden plank. This rectangle shaped structure is representing wooden plank and 3 metal strips, 2 which are L-shaped, first, second L-shaped metal strip, and third is a straight strip. These are 3 the metal strips, and this left gap and right gap, here we connect the resistance box and unknown resistance. Between this terminal A and C, this 1 meter long wire is used, metal wire is used. The portion which is shown by the fluorescent color is a meter scale. This J is representing jockey. G is galvanometer. Between A and C, cell is connected along with the key. We can compare it, its connections can be compared with the Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge, between A and D point, resistance R is connected. Here you can see between A and this terminal D, resistance box RB is connected. It plays the role of R. Between C and D, we connect S. So here you can see between C point and D point, unknown resistance S is connected. In Wheatstone bridge, between A and B, P is connected. So here between A and B, the resistance P will come. Actually, P is the resistance of AB part of the metal wire. This AB length is also known as L, balancing length. When the jockey is kept at this particular point, the galvanometer shows zero deflection. To measure the resistance, first we have to obtain the null point, zero deflection point. If we keep the jockey at left side or right side of this point, we'll find the deflection in the galvanometer. At one particular point, the deflection comes zero. That point is called null point, and null point is marked as B in the diagram. Since its total length of the wire is 100 centimeter, so B to C part has a length of 100 minus L centimeter, where L is the balancing length. In Wheatstone bridge, between B and D we connect galvanometer. Here you can see between B and D galvanometer is connected, and between A and C we connect cell. So here between A and C the cell is connected. So in this way we can make the connection, and this connection, so learn this connection very well because 3 experiments are based on meter bridge. So it is useful in theory as well as in practical examination.
So when we want to know the unknown resistance, that wire is connected in this right gap. In the left gap, resistance box is connected. In resistance box, many suitable resistances are present. So by taking the any value of resistance and closing this key, we keep the jockey first at A terminal and then at C terminal. If the galvanometer shows deflection in opposite direction, means अगर आपने A पे रखा और लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आया और C में रखा और राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया, मीन्स योर कनेक्शन इज करेक्ट. तो फिर हम AC वायर में किसी एक पॉइंट पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑब्टेन करते हैं. तो जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया, जैसे यहाँ पे हमने J पॉइंट को मार्क किया या B पॉइंट को मार्क किया नल डिफ्लेक्शन, तो A से लेके इस B तक का जो लेंथ है स्मॉल l, इस वायर का इतने पार्ट के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो P का रोल प्ले करेगा. इसी तरह जो बचा हुआ लेंथ है 100 माइनस l, वो Q रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है. और जब हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S रखते हैं, तो P के प्लेस में A से लेके B वायर तक का रेजिस्टेंस, Q के प्लेस में B से लेके C तक का रेजिस्टेंस, R के प्लेस में रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स रखा जाता है. If small x is the resistance per unit length, then the resistance of AB part of wire P is equals to x into L, and for BC part of wire Q is equals to x into 100 minus L. By putting the value of P and Q in equation 1, we get x into L upon x into 100 minus L is equals to R by S. And on simplifying, the equation comes S is equals to R 100 minus L upon L, where L is the balancing length and R is the resistance taken out from the resistance box. And if we want to calculate the resistivity of the given wire, unknown wire, then we use this formula: resistance equals to resistivity into length upon area. Here length means length of the experimental wire, it is not the balancing length, and capital A is the cross sectional area of the wire. Since the wire is cylindrical in shape, hence cross sectional area equals to pi r square. So by putting the value of R, that is radius of the wire, its resistance and length, we can calculate rho, that is resistivity of the wire. Now consider this example, according to which in a meter bridge arrangement, when 10 ohm resistance is connected at the left gap, the balance point is obtained at 2/5 of the length of wire. Find the balancing length and the value of unknown resistance. Since L, that is balancing length, is 2/5 of the total length, so we can write L is equals to 2 upon 5 into 100. So balancing length is coming 40 centimeter. And then use the Wheatstone principle, according to which P upon Q equals to R upon S, or S equals to R into 100 minus L upon L. So when you put the value, the unknown resistance S comes 15 ohm. Conceptual question may be asked on the meter bridge. One of them is, in meter bridge, it is preferred to obtain the null point between 40 to 60 centimeter wire. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज पर बेस, तो ये प्रेफर किया जाता है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है 40 से 60 सेंटीमीटर, या और थोड़ा सा ब्रॉड रेंज कर दे तो 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच में आए, मतलब मिड पॉइंट के आसपास आएगा तो हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितना नल पॉइंट मिड पॉइंट के बीच में आएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होती है. दैट्स वाई इट इज़ प्रेफर्ड टू ऑब्टेन द नल पॉइंट नियर द मिड पॉइंट. इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है
विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मीटर ब्रिज वायर एंड वाई। मीटर ब्रिज का वायर जो 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है और क्यों। तो यूजली कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या यूरेका यूज़ किया जाता है। इसके 2 रीज़न हैं, इनके रेजिस्टिविटी हाई रहती है, रो का वैल्यू हाई होता है, और दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी स्मॉल होती है, अल्फ़ा का वैल्यू स्मॉल होता है। अल्फ़ा का वैल्यू स्मॉल होने का ये एडवांटेज है कि टेम्परेचर में अगर वेरिएशन भी होता है तो वायर के रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। इसलिए हम यूरेका या कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन को यूज़ करते हैं एज ए मीटर ब्रिज वायर। एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप and S is connected at right gap of meter bridge, balancing length is obtained at 1/3 of the total length। लेफ्ट गैप में R को और राइट गैप में S को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ जो S है ये टोटल लेंथ की जो बैलेंसिंग लेंथ L है ये टोटल लेंथ 1 मीटर की 1/3 होती है। एंड व्हेन द 6 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R, इस R के साथ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, द बैलेंसिंग लेंथ गेट डबल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड S। जो यहाँ पे R और S ये 2 रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालना है। जब केवल R यूज़ कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ टोटल लेंथ का 1/3 हो रहा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग S इक्वल्स टू R 100 माइनस L बाई L। इस 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ 1 लिखा है, और L इज 1/3 ऑफ इट, तो 1 का 1/3 यहाँ पे 1/3 लिखा है, और स्मॉल l की जगह फिर 1/3 किया है। इसको सिंप्लीफाई करने पे S और R का रिलेशन आया, S इक्वल्स टू 2R, इसे इक्वेशन 1 कर दिया। नाउ 6 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R, तो अब लेफ्ट गैप में टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस 6, और राइट का रेजिस्टेंस एज इट इज S ही है। एक बार फिर यही फॉर्मूला यूज़ किया, S इक्वल्स टू R 100 माइनस L अपॉन L। R की जगह R प्लस 6 लिखा, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिखा, और क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ डबल हो रही है, पहले 1/3 थी, अब उसका डबल यानी 2/3, तो इस L के प्लेस पे 2/3 कर दिया, और इसको सॉल्व किया तो हमें 2S इक्वल्स टू R प्लस 6 एक सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है। इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो R का वैल्यू 2 ओम एंड S का वैल्यू 4 ओम आ गया।